हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गांधीवाला जीएस क्लासेस। हम हमारी यहाँ पे सीसेट सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने कल हमारा 8th वीडियो डाल दिया है। आज इस 9th वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस वगैरह अनसीन पैसेज रीड करके उनके क्वेश्चन आंसर्स निकाल सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि ये हमारा पैसेज किस से रिलेटेड है और किस चीज़ पे है। So, a number of empirical studies find that farmers are risk average to only moderately in many cases. There is also evidences to show that farmers risk aversion results in cropping pattern and input use designed to reduce risk rather than to maximize income. Farmers adopt a number of strategies to manage and cope with agricultural risk. These include practices like crop and field diversification, non-farm employment, storage of stocks, and strategic migration of family members. There are also institutions ranging from tenancy to kinship, extended family, and informal credit agencies. One major obstacle to risk sharing by farmers is that the same type of risk can affect a large number of farmers in the region. Empirically, studies show that the traditional methods are not adequate. Hence, there is a need for policy interventions, especially measures that cut across geographical region. Policies may aim to tackling agricultural risk directly or indirectly. Examples of risk-specific policies are crop insurance, price stabilization, and the development of varieties resistant to pests and diseases. Policies which affect risk indirectly are irrigation, subsidies, credit, and access to information. No single risk-specific policies is sufficient to reduce risk and is without side effects. Whereas policies are not specific to risk influence the general situation and affect risk only indirectly. Crop insurance as a policy measure to tackle agricultural risk directly deserves careful consideration in the Indian context and in many other developing countries because of the majority of farmers depend on rain feed agriculture, and in many areas yield variabilities is the predominant cause to their income instability. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फार्मर्स से रिलेटेड पूरा आपका पैसेज है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 76 क्वेश्चन में बोला जा रहा है दैट द नीड फॉर पॉलिसी इंटरवेंशन मिटिगेट रिस्क इन एग्रीकल्चर इज बिकॉज ऑप्शन 1 इज फार्मर्स आर एक्सट्रीमली रिस्क averse. Second option is farmers do not know how to mitigate risk. Third option is the method adopted by farmers and existing risk sharing institutions are not adequate. And the last option is majority of farmers depends on rain fed agriculture. यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि डी ऑप्शन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं पैसेज के अकॉर्डिंग, आपका आंसर यहाँ पे सी होगा 76 का। द मेथड्स अडॉप्टेड बाय फार्मर्स एंड एग्जिस्टिंग रिस्क शेयरिंग इंस्टीट्यूशन आर नॉट एडिक्वेट, दैट्स वाई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एमरजेंस फ्रॉम द अबव पैसेजेस. Let me see the options. The first option is one can identify a single policy that can reduce risk without any side effect. Second option is no single task specific policy is sufficient to reduce agricultural risk. Third option is policies which affect risk indirectly can eliminate it. And the last option is government's policy intervention can mitigate agricultural risk completely. सो आप इसको थोड़ा पॉज कीजिए और देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। सो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारा बी ऑप्शन होगा दैट नो सिंगल टास्क स्पेसिफिक पॉलिसी इज सफिशिएंट टू रिड्यूस एग्रीकल्चरल रिस्क। चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है? सो ये पैराग्राफ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। Financial market in India have adequate greater depth and
लिक्विडिटी ओवर द ईयर्स, ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हमें लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या है। तो steady reforms since 1991 have led to growing linkages and integration of the Indian economy and its financial systems with the global economy. Weak global economy prospects and continuing uncertainties in the international financial market, therefore, have had their impact on the emerging market economies. Sovereign risk concerns, particularly in the Euro area, affected financial market for the greater part of the year, with the contagion of Greece sovereign debt problems spreading to India and other countries by way of higher than normal levels of volatilities. The funding constraints in international financial market could impact both the availability and cost of foreign funding for banks and corporates. Since the Indian financial system is bank dominated, banks' ability to withstand stress is critical to overall financial stability. Indian banks, however, remain robust, notwithstanding a decline in capital to risk weighted assets ratio and a rise in non performance asset level in the recent past. Capital adequacy level remains above the regularity requirement. The financial market infrastructure continues to function without any major disruption, with further globalization, consolidation, deregulation, and diversification of the financial system. The banking business may become more complex and riskier. Issues like risk and liquidity management and enhancing skill therefore assume greater significance. Let me see हमारे फाइनेंशियल वाले जो पैराग्राफ पैसेज है इसके हमारे क्या क्या क्वेश्चंस हैं और हम इसका किस तरीके से आंसर दे सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 78 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ओके वी डिड इट ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 78 पे हम आ जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है दैट अकॉर्डिंग टू द पैसेज द फाइनेंशियल according to the passage the financial market in the emergence marketing economics including India had the adverse impact in recent years due to हम ऑप्शंस देखेंगे स्टेटमेंट्स क्या क्या दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस लगाएंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग व ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, second is uncertainties in the international financial market, the third is sovereignty risk concern in the euro area, and the fourth is bad monsoon and the resultant crop loss. So select the correct answers during the code given below. Our options is 1 and 2, 1 2 3, 2 3 and 2 3 4 only. इसको थोड़ा सोचिएगा उसके बाद फिर देखिएगा इसका क्या आंसर है। सो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा स्टेटमेंट है वो तो पूरा का पूरा आपका हमारे पैसेज से मैच करता है, बट द फोर्थ वन इज़ नॉट इन पैसेज। हमारा फोर्थ वन जो मॉनसून है उससे हमारा कुछ भी ऐसा रिलेटेड नहीं किया गया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट आर अफेक्टेड बाय ग्लोबल चेंजेस मेनली ड्यू टू द, so here is our options. First option is increase inflows of remittance from abroad. Then the second option is enormous increase in the foreign exchange reserves. The third option is growing global linkages and integration of the Indian financial market. And the fourth one is contagion of Greece sovereign debt problem. अगर आप ध्यान से पैसेज पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर देने में बहुत ही इजी रहेगा, बहुत आसानी से आप इसको ऑप्शन देते हैं आंसर दे देंगे। सो अवर ऑप्शन इज सी ग्रोइंग ग्लोबल लिंकेजेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन फाइनेंस, ये हमारे इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज in the Indian financial system, bank stability to withdraw stress is critical to ensure overall financial stability because Indian financial system is, our options is controlled by the government of India, less integrated with banks, controlled by the Reserve Bank of India and dominated by banks. So our option ऑप्शंस देख लिए हैं, इसका आंसर आपका क्या होगा। सो इसका आंसर होगा आपका डोमिनेटेड बाय
banks. Our next question is, risk and liquidity management assumes more importance and the Indian banking system in future due to, our statement is, first is further globalization, second is more consolidation and deregulation of financial system, third one is further diversification of financial system, and the fourth is more financial inclusion in economy. So our select the correct answers using the code given below. Codes is 123, 234, 12 and 3 and 4. So our correct answer is ऑप्शन ए विच इज़ 1, 2 एंड 3. आप अकॉर्डिंग टू पैसेज देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट पैसेज हमारे बिल्कुल छोटा सा है थोड़ा सा, तो इसको भी आज हम रीड कर लेते हैं यहाँ पे. दिस इज़ अवर लास्ट पैराग्राफ, फिर हम हमारा यहाँ पे वीडियो ख़त्म करेंगे. तो पैराग्राफ हम देखते हैं किस चीज़ से रिलेटेड है और क्या कुछ बोल रहे हैं इसमें. पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. Crude mineral oils comes out the earth as a thick brown black liquid with a strong smell. It is a complex mixture of many different substances, each with its own individual quality. Most of them are combination of hydrogen and carbon in varying proportion. Such hydrocarbons are also found in other forms such as bitumen, asphalt, and natural gases. Mineral oil originates from the carcasses of tiny animals and from plants that live in the seas. Over millions of years, these dead creatures from large deposits under the sea of years, these dead creatures from large deposited the seabed and ocean currents covered them with a blanket of sand and silt. As the mineral harden, it becomes sedimentary rock and effectively shuts out the oxygen, so preventing the complete decomposition of marine deposition underneath. The layer of sedimentary rock becomes thicker and heavier. This pressure produces heat, which transforms the tiny carcasses into crude oil in a process that is still going on today. Our questions is, mineral oil deposition under the sea do not get completely decomposed because our options is, first, they are constantly washed by the ocean sea. Second option is become rock and prevent oxygen from entering them. Third is contain a mixture of hydrogen and carbon. And fourth is a characteristics of organism lying in saline conditions. So इसका आंसर हमारा होगा B, become rock and prevent oxygen from entering them. Now नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दिया है. द क्वेश्चन नंबर 83 इज, सेडिमेंटरी रॉक lead to formation of deposition oil deposits because our options is, there are no saline conditions below it. Next is, it allows some dissolved oxygen to enter the dead organic matter below it. And the next option is, weight of overlying sedimentary layer cause the production of heat. And the fourth option is, it contains the substances that catalyze the chemical reactions required to change dead organism into oil. So इसका आंसर क्या होगा, आप एक बार सोचिए. इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी जो है हमारा इसका आंसर होगा. ओके स्टूडेंट्स, हम यहीं पे आज यहाँ का इसको फिनिश करते हैं. चलिए एक लास्ट और देख लेते हैं पैरा, उसके बाद फिर हम यहाँ फिनिश करेंगे बिकॉज वी डिडंट कंप्लीट अवर 15 मिनट. सो ये फटाक से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. पैसेज हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना. सो मैनी नेशंस नाउ प्लेस देयर फेथ इन कैपिटलिज्म एंड गवर्नमेंट्स चूज इट as the strategy to create wealth for their people. The spectacular economic growth seen in Brazil, China, and India after the liberalization of their economies is proof of its enormous potential and success. However, the global banking crisis and the economic recession have left many bewildered. The debatees tend to focus on free market operations and forces their efficiency and their ability for self-corrections, issue of justice's integrity and honesty, and are rarely elaborated to highlight the failure of the global banking system. The apologists of the system continuing to justify the success of capitalism and argue that the recent crisis was a blip. Their arguments betray an ideological bias with the assumption that an unregulated
market is fair and competent, and that the exercise of private greed will be the larger public interest. Few recognizations the bidirectional relationship between capitalism and greed, that each enforces the other, surely a more honest conceptualization of the conflicts of interest among the rich, powerful players who have benefited from the system. Their biases and ideology is needed. The focus on the wealth creation should also highlight the resultant gross inequalities. Okay students, इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे और उनका आंसर लगाने की कोशिश करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज इज the apology of the free market according to the passage believes in. Our options is market without controlling by government authorities, market without protection by the government, ability of market to self control, market for free goods and services. So इसका ऑप्शन के आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा C, ability of market to self-control. The next question is, with reference to ideological biases, and the passage implies is that our options is free market is fair but not competent, free market is not fair but competent, free market is fair and competent, and free market is neither fair nor biased. So इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा C. The free market is fair and competent. Next question is, the exercise of private greed will be in the larger public interest from the passage statements is, first refers to the false ideology of capitalism, second underlies the righteous claims of the free market, third shows the benevolent face of capitalism, fourth ignores resultant gross inequalities. Which of the statement given above is correct? Our options is 1 only, 2, 3, 1 and 4, 4 only. So according to passage अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे इसका ऑप्शन जो होगा C, 1 and 4. हमारे ऑप्शन यहाँ पे 1 and 4 होंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन C सही हो गया. ओके स्टूडेंट्स, ये लिए हमारे आज के कुछ पैसेजेस से जिसकी हमने प्रैक्टिस की. हम 2014 के सी सेट के प्रैक्टिसेस तक आ गए हैं. ऐसे ही धीरे करते करते हम 2021 तक पूरे जितने भी हमारे एंशिएंट पैसेजेस रहे हैं सी सेट के, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, रीड करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.